Do you just think that just this brutal star power of Virat Kohli was maybe too much for Naveen Ulhaq to handle, and he needed your support, your assistant? He needed to know that the mentor is there to back me up. He needed that No, thing. it's not That's only why about you came. Naveen Ulhaq. I would have backed anyone, and I would have backed everyone in that dressing room. That's my job. That's how I am. That's how my mindset is. If I'm a mentor or a coach of a particular franchise, and once the game is done, I have all the right to defend my players. And why should I not defend my players? Why should I not? Just because someone has a broadcaster working for him left, right, and center, someone has got more social media followers, doesn't have any right to walk over someone once the game is over. And if I could not stand next to my players, I have no right to be sitting in that dressing room. And imagine if the same thing happens to your staff. Would you not stand by your staff? Tell me. Absolutely. Would you not? You will. Absolutely, yeah. Because ultimately, they're also looking up to you. And that is exactly where I thought that it was very important for us. As a franchise, it was important for us to have our own identity. It was important for us to make sure we tell all the other franchise that we are there and we mean business. That no one can come to Lucknow and do whatever he wants to once the game is over. And we just kept looking at it and kept making those things happen. We cannot do that. When I started this answer, I said it very clearly that everyone has a right to play for his jersey, to play for the teammates, and more importantly, to play for his respect. If someone cannot defend his respect, then it means that he's got nothing left in him. You wear your emotions on your sleeve. This is your strength, as well as some may say your weakness. I think we consider it. It's very refreshing that your aggression and your passion shows on the field. After that incident with Naveen Ulhaq and Virat Kohli, uske baad mahol kaise hota hai? Your relationship is back on track, or is there still sort of unsaid thing? Are you No, still my relationship with everyone is exactly the same how it was. I have never taken any fight off the field, and I will never take it off the field as well. And this is also media, social media created, that I have certain issues with certain players. Not at all. Why should I have? And I'm not a cricketer anymore. I don't play active cricket. I've got nothing, honestly, to look forward to from that point of view, where I'm competing against anyone or everyone who's playing international or, for that matter, franchise cricket. What is that? I have all the right to be passionate about winning a game of cricket with a franchise, whichever franchise I'm involved with. Why? You don't want to win every time. I want to win every time. You want to win every time. Everyone has the right to win every time. And in that case, if this is my way of being passionate and try to win and be aggressive, that's my way. People like it, not like it, that's their problem, not mine. right? So I have no issues. Yeah, if someone wants to take it personal, they have all the right to take it. But I don't take any issues or any fights personally. So you're saying most of this is basically Yes, media. because ये चीज़ें बिकती है ना. क्योंकि अच्छा आज मुझे ये बताओ कि कल इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, why is it always कि आप मेरी और शाहिद अफरीदी की लड़ाई दिखाते हो? Why? There are so many other fights that has happened. Show something positive. Show something that where India has gone on to win 2007 T20 World Cup. Show when India has won the Asia Cup against Pakistan. You know why also? It's something that I want to fight against Shahid Afridi, and Gautam has taken on cudgels on my behalf. Not only that, at least for me, it is that. No, I think the Shahid Afridi thing is because of that one clip. It was, I think, the Test series where he was standing there while you were running. He was that standing. Was a one-day series. One-day series, sorry. Yeah, but मेरा where you nudged him and you went up to him. मेरा point ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी इंडियन क्रिकेट में सिर्फ वही लड़ाई हुई है. नहीं. उसके बाद भी बड़ी चीज़ें हुई हैं. नहीं. क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, सब कुछ नंबर की गेम है ना, कि आपको सोशल मीडिया पे कितने ट्रैक्शन मिलता है, आपको ब्रॉडकास्ट में टेलीविज़न पे कितने आपको टीआरपी की रेटिंग मिलती है. सब कुछ वो नहीं है. अगर आप एक ही चीज़ दिखाते रहोगे तो वो अल्टीमेटली नेगेटिव ही हो जाती है. पॉजिटिव चीज़ें भी है दिखाने के लिए ना. इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हराए हैं, लेकिन जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होगी आप वही दिखाओगे. मेरे से ज़्यादा लड़ाइयाँ बाकी खिलाड़ियों की भी. It's like शाहरुख is in that वानखेड़े. Yes. जो उसके साथ हुआ था, शाहरुख के साथ वानखेड़े में हुआ था. Every time शाहरुख is there in the stadium, वो तो बेचारा I think stadium भी नहीं जाता उसकी वजह से. बताओ. Because they say that he's going to get down and this is what will happen because of that. See, this is where the problem is. Can't we move on from that? If you don't want to move on, I'm absolutely fine with it because I have moved on. I had moved on that particular day itself. अगर लोगों को लगता है I hadn't moved on, I have moved on long time back. People don't want to move on, that's their problem. How can I control what a broadcaster or a television or an electronic media or a social media
wants to show. This is not in my hand. What is in my hand is that I have all the right to win a game of cricket and be passionate about it, and more importantly to be absolutely honest and accountable to the franchise or a team which I'm representing. अब वो legend तो बन गया है ना, that there is a rivalry, and that's why I think even in that crowd में which you say that didn't happen where they came and say Virat when you Absolutely were going. no, that's not true. बिल्कुल गलत है ये. Again, this is again a very social media created kind of a thing. वहाँ पर बहुत लोग थे. वो ये भी बताया गया कि वो मैच ही नहीं था इंडिया का, तो वो मैच ही नहीं था जिस मैच में ये चीज़ हुई है. अगर इंडिया का मैच होता, आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो मैच ही किसी और का था. उसमें तो ये भी दिखाया गया कि मैं दूसरी शर्ट पहनी हुई थी, मैंने कुछ और पहना हुआ था इस टाइम पे. This is about when he was when he was walking अभी away. एशिया कप. Yeah, I'm just putting context for our viewers. वो पाकिस्तान का मैच था. आई डोंट इवन रिमेंबर, शायद वो पाकिस्तान का ही मैच था, पाकिस्तान श्रीलंका, आई डोंट नो किसका मैच था वो. बट आप जब कमेंट्री करके वापस जाते हैं तो आप क्राउड के वहाँ से जाते हैं. डिपेंड्स ऑन द स्टेडियम एज वेल. अब अगर कुछ लोग वहाँ पर खड़े होके हैकल कर रहे हैं, हैकल भी नहीं, अगर आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो मैं नहीं बोल सकता पॉडकास्ट पे इस तरीके की, तो आप क्या आप करते हैं कि आप सर नीचे करके चले जाएं. एक बार ही उनको बोला कि आप मत करिए. अगर सिक्योरिटी ने वहाँ पर बोला कि आप ये चीज़ें मत करिए, ऑब्वियसली श्रीलंकन सिक्योरिटी थी वहाँ पर, उन्होंने मना किया. अगर कोई नहीं सुनने को राजी, and in the heat of the moment I absolutely accept that I made a wrong gesture. I should not have made a wrong gesture. I should not have made that gesture. But sometimes when you listen to these kind of things, you react. Yes. And everyone reacts differently. मतलब अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि जैसे आप रिएक्ट करोगे वैसे ही मैं रिएक्ट करूँ, वैसे ही मैम रिएक्ट करेंगे, everyone has different mindsets. तो एक टाइम अगर समझा दिया गया था कि यार ऐसी चीज़ें मत बोलो, ऐसे नारे मत लगाओ, ऐसे स्लोगन्स मत करो, उसके बावजूद if someone doesn't want to listen, then you react. Which I accept. I'm accepting that I should not have made that gesture. But it is उसमें भी कितने जर्नलिस्ट घुस गए क्योंकि आपको सिर्फ अपनी TRP चाहिए थी. आपने ना किसी से पूछा एग्जैक्टली क्या हुआ, आपने ना कभी क्लैरिफाई किया, ना आपने बोला कि आपने तो ये भी बता दिया कि वो इंडिया का मैच था, इंडिया का मैच भी नहीं था. उसके बावजूद आपने सिर्फ रिएक्शन दिखाया. रिएक्शन आपने इसलिए दिखाया क्योंकि एक चीज़ जो IPL में हुई थी उसको आप मूव ऑन उससे नहीं करना चाहते थे, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते थे. तो आपने बोल दिया कि जी एक इंडिविजुअल के नाम के नारे लग रहे थे इसलिए ऐसा रिएक्ट किया. पीपल हैव ऑल द राइट, आप जितने मर्जी नारे लगाई, मेरे को उससे क्या प्रॉब्लम है. जैसे मैंने आपको बोला कि आई डोंट टेक एनी फाइट्स पर्सनली, बट या व्हेन इट कम्स टू द नेशन, व्हेन इट कम्स टू समवन अब्यूजिंग अ नेशन, माय नेशन, आई हैव ऑल द राइट टू रिएक्ट इन अ वे व्हिच आई वांट टू, प्रॉब्ली इन अ मोस्ट सेंसिबल वे. बट जो चीज़ें लिखी गई और जो बोली गई विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच वॉज एब्सोल्युटली नॉट राइट, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इवन बॉदर्ड. यस आई गिव, वहाँ पर मैंने मीडिया को बुला के बोल दिया था. उसके बाद आई डिड नॉट इवन रिएक्ट बिकॉज आप कितने लोगों का मुंह बंद कराओगे, कितना सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई करोगे, क्योंकि इट इज़ नेवर एंडिंग. एंड माई कॉन्शियस नोज इट, माई हार्ट नोज इट. इफ़ आई कैन लिव विद पीस, इफ़ आई कैन स्लीप इन पीस, आई डोंट हैव एनी issues ki what people are talking about it. It's like that there's a whole lot of controversy which came after the Prime Minister went into the dressing room and spoke with the Indian team after they lost the finals. So there's a whole bunch of people saying that that is a sacrosanct area just for players and the Prime Minister shouldn't have gone. While Ravi Shastri and the others said that it's okay, there's nothing wrong with that and it's good that he was there. So these are 2 points of view. Where do you stand in that? मैम एक तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ. मैं ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, और बट ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था ना, पनौती, इट इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट वर्ड दैट कुड हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट एनीवन, पर्टिकुलरली अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन. और रीज़न मैं बताता हूँ कि जिन्होंने भी ये इस्तेमाल किया और जिन्होंने ये, क्योंकि ये शब्द मुझे याद है कि एक टाइम पे IPL के टाइम पे जब ये प्रेडिक्शंस मांगते थे तो ये कई इंडिविजुअल्स के, कई प्लेयर्स, एक्सपर्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता था. पहली बात तो ये कि इतना ख़राब शब्द है कि आप किसी के भी खिलाफ ये शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते. जब भगवान ने सबको बनाया तो किसी एक मकसद से बनाया, और आप किसी को पनौती क्यों कहेंगे, क्यों? दिस इज़ प्रॉब्ली द लोएस्ट थिंग दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट एनीवन, एंड particularly a prime minister, and prime minister has all the right in the world to be in that dressing room, absolutely all the right. इसमें कोई खराबी नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने ही ये किया, इससे पहले भी ऐसे तो जैसे मैंने आपको बताया था 2011 सेमीफाइनल में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहाँ पर थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर थे. अगर वो मैच हारे होते और डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर हमारे से आके मिलते तो उसमें क्या खराबी होती? प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ पर आके प्लेयर्स से मिल के, एंड आई नो इट फॉर द फैक्ट, क्योंकि हम भी बहुत T20 वर्ल्ड कप्स में इंपॉर्टेंट मैचेस हारे हैं,
कि किस तरीके का मूड होता है, किस तरीके के प्लेयर्स, व्हाट प्लेयर्स आर फीलिंग. मतलब no one else can even thought about it. No politician. If I'm sitting here as a politician, I can tell you कि no politician, no actor, no one in this world can feel what those players are feeling at that moment. कि शायद अगले 4 साल बाद जो 50 ओवर वर्ल्ड कप आएगा, पता नहीं इनमें से कितने लोग उस वर्ल्ड कप का पार्ट हों. एक ड्रीम, when you see your dream getting vanished, finished, shattered, imagine what a mindset would be. और अगर देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं, चाहे वो 2 मिनट के लिए हैं या चाहे उनके 2 शब्द अगर उन प्लेयर्स को बेटर फील कराते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. उससे बेहतर कुछ नहीं है. सो आई थिंक कि हमारे देश में अब नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है. हर चीज़ को पोलिटिसाइज करो, हर चीज़ की पॉलिटिकल माइलेज ले लो.